सर आपने सुना होगा आजकल कई ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं कि ये खाना जो है बच्चों के लिए नुकसानदायक है या ये फलानी चीज इंसानों के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल सही बात है। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक यही है। अच्छा। ये हमारा जो वीडियो का टॉपिक है ये बोल रहा है कि अमेरिका के कुछ ऐसे खाने जो कि कई दूसरे देशों में बैन लगा हुआ उसको। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे देखें, समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अब क्या कर जाए, बच्चों की बात अगर आ रही है कि बच्चों को क्या खिलाने का, ये आजकल जो चल गए ना कुरकुरे, इनके लिए हम बच्चों को जितना मैंने दूर रखें। उतना लेने की क्या आ रहे। अब उनको समझा तो तो बच्चे ही है। बाबू भाई जैसे कि आपने बोला है, इसमें दो कारण है। दो कारण इसलिए है क्योंकि इसमें टीवी पे बच्चे देखते हैं और उसमें एडवर्टाइज बहुत आ रही है, पॉपकॉर्न का, चिप्स का, इसका, तो बच्चा तो उसी से जिद करेगा। और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इस पे बैंड भी नहीं लगा रही है इन चीजों को, जो बच्चों को नुकसान हो गया। काफी टाइम पुरानी चीजें रहती है, ये डेट इज फायर रहती है उसकी, बच्चा वही खा रहा है तो नुकसान तो देगा ना चीजें। तो यार भैया बात पैसे की नहीं है, बात तो ये है कि वो जो चीजें कौन से तेल में चल रहे हैं, क्या क्या उसमें मिल रही है, क्या अपने को उसके जानकारी ये अपनों को बात पता नहीं है। भैया मेरे उसमें हमारे जमाने में क्या है कि ये सब चीजें थी नहीं, वाकई में हमारे जमाने में क्या है, गोश्त की बोटी है, जामफल है और फल फ्रूट, इमली वगैरह है, राजगीरे का लड्डू है, तो कभी इमली खा ली, कभी कभी खा लिया, खटाई में दूध में एक चीज। बात बिल्कुल सही है। ये चीजें जो जवान आज तो क्या हो जाएगा, लोग जो चीज है उसको खाना बोल रहे, ये चीजें खा रहा है तेल से। तेल खा रहा है। सर आप क्या बताना चाह रहे हो, देखते हैं ये भी अपन। Most Americans want to believe that the United States is the gold standard of clean food. But that belief may not hold up to scrutiny. From unsanitary practices in mass production to the addition of dangerous chemicals, countries have good reason to give the side eye to imported foods claiming to be USDA approved. That's right. This week we're talking about American foods that have been banned by other countries. But before we get started, be sure to subscribe to the Weird History Food channel. Then leave a comment and tell us what other world food facts you would like to know more about. यार बाबूजी, तो रसले चीजों का मिश्रण बने रहे तो वो होता ना, वो थोड़ी भी है यार। Now let's see how wrong the rest of the world really is. There have been rumors about the dangers of eating them. Every one of us heard at least one classmate claim that the red ones make you sterile, and the yellow ones, they give you cancer. Turns out, it might be worse than that. यार बाबू इतना खतरनाक मामला, अब बोलो वो कैसी चीज होना चाहिए, इतना खतरनाक मामला यार। First of all, your classmate wasn't wrong. The dyes known as Yellow 5 and Yellow 6 have been linked to hives and hyperactivity in children. Sweden and Norway have banned the candies out of concern. The European Union will most likely be banning Skittles at the end of the year, having already swapped out some of the dye for more natural flavors. वो अब तो ये ना बेटा, ये वो चीजें हैं जो छोटे बच्चे खाते हैं। हाँ यार देखो आप यार, सब तो मतलब ये हुआ कि बच्चे जहर खा रहा है, जीते जी खा रहा है। बिल्कुल यही है यार। This is because of something called titanium dioxide, which can be found making the colors pop across the rainbow. Research linked titanium dioxide to damaged DNA, which can lead to cancer. While Europe may be ahead of the Skittles awareness curve, America is quickly catching up. अच्छा बाबू भाई, इस शो में देखते और आज से कसम खा रही हूँ कि मेरे बच्चों को कभी चीज नहीं दिलाऊंगा इसमें, खान दूंगा। In May of 2021, the Environmental Working Group asked the FDA to categorize titanium dioxide as toxic. And yes, before you ask, right now the FDA says it's okay to consume some of that chemical compound. You can taste the rainbow, but just in moderation. California is home to an ongoing lawsuit against Mars Inc., the parent company of Skittles. देखो यार बाबू भाई, कंपनी वाले संयम से काम रखो, और कंपनी तो वो तो मुनाफा देख रही है। वो संयम काम तो उछल करेगी, वो तो मिला पर जाए देखेगी, उससे तो काम करेगी, होता है, चल रही है उनका तो काम। अरे यार बोलो अब इतना मरण अपने से नहीं होगी, अपने जैसे की मरण होगी यार। The lawsuit claims Skittles are not only toxic but are unfit for human consumption. So maybe for now, play it safe. Just go have some Swedish fish instead. देखो सही बात है भैया।
Ever looked at a piece of crusty French baguette, be it in cartoon or in real life? But let's be honest, it was probably in the hands of Pepe Le Pew, and think, I can't make a sandwich with that. As great as we talk about the invention of sliced bread, a lot of European countries have actually banned much of what you'd find on America's wide grocer shelves. That's because we make a lot of our bread not just with grain, but with a variety snap packs worth of additives, like azodicarbonamide, for example, which helps bleach flour and strengthen dough. Fun fact about azodicarbonamide, it's also used in a spectrum of industrial products, including yoga mats. वो जो चटाई बन रही है और वो तुम्हारे खाने में मिला रहा है और तुम उसको बोल रहा सही बात है. Downward dogs. The European Union is really against the idea of its citizens eating yoga mat material and has banned their use in food products. यार ये सब देखा जाए तो ये जो ब्रेड है ना जीव से पीर भी है. हाँ यार. अब अपन को क्या वो कौन सी चीज है. Pork, the other white meat, is a staple of American meats, along with chicken, fish, and beef. From bacon to ham, hot dogs to pork chops. American meat eaters consume about 67 pounds of pig per person every year. Soo-ee, my heart is stopping. Don't get us wrong, other nations indulge in swine just as much, if not more, than Americans. अब देखो अपने को ये जो सुअर है इससे नाग नहीं है. कोई सुअर खाए या कुछ करे ये उसकी चाहे उससे हमने कोई पता नहीं है. सही बात. उसकी सुअर में दूसरी चीज तुम मिला तो ये तो गलत बात है नहीं है. सही बात. So why doesn't the U.S. export scores of succulent bacon-bearing boars? Well, it turns out America adds a lot of chemicals during processing. Ractopamine in particular is used in many pig farms to raise porkier porkers. Ractopamine, which we put a dash of in a lot of foods, has been banned in 160 countries, which all consider the drug unsafe for human consumption. This in turn has led to a prohibition of pork exports across the world. देखो यार बाबू भाई वो सुअर के गोश्त को तक के नहीं छोड़ा उसमें भी मिलावट कर दी यार. क्या जमाना है यार. The EU hasn't touched the stuff since outlawing ractopamine in 2009. China and Russia have been ractopamine-less since 2013. Maybe that's because ractopamine has the same effects as an intoxicant on humans and can cause tachycardia, headaches, and muscle spasms if consumed in large enough quantities. But it is a small price to pay for a perfect piece of the pork. अब खाली एक स्वाद के लिए आपका जो ज़हर को है कितनी गलत बात है यार. Hygiene in America often comes down to dousing stuff in a chlorine bath and calling it FDA approved, and chicken is no exception. Pathogen reduction treatments, or PRTs, refer to the use of different chemicals to destroy harmful microbes on raw meat. Somewhere along the line, American food regulators decided a quick chlorine shock was the best way to kill salmonella and other bacteria on uncooked poultry. Chlorine marinade. And look, it's not that the EU is against taking a long gulp from the public pool now and then. In fact, the risks posed by chlorine consumption are relatively low. बाबू भाई अच्छा है कि चिकन अपने सामने कटवाओ और अपने सामने तुलवाओ और अपने सामने अपन लेके आ जाओ. तो आपने कोई कंपनी से नहीं अपन लोगों का ये बेहतरीन सफाई कराओ ना बेहतरीन तरीके से खाओ. बिल्कुल कल लाके. The bigger concern is that the chlorine baths are just an eye-burning Band-Aid on a larger problem. The tip of the beak, so to speak. They're worried that the PRTs are insufficient to deal with more than just the normal bacteria and don't get at a potential contamination from things like low-quality feed to unsanitary coops on farms. ये चीज़ तो अपने लगा ही है क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कई ये जो फिल्टरिंग वाले हैं ना जब बड़ा फार्मूला ये वो दवा है इंजेक्शन है कोई दाना है वो ऐसे खिला बड़ा कर रहा है ये चीज़ तो अपने भी आगे नहीं अपने वहाँ भी ऐसा होने लग गया. अरे भाई इतना सप्लाई हो रही है तो कल से हो रही है. The EU called the chlorine rinse an easy fix, arguing no chemical rinse will ever remove all bacteria from meat heavily contaminated as a result of poor hygiene. That hurts extra to hear it from the French. अच्छा बाबू भाई कुल मिला के ये बात है कि चिकन खाना भी सुरक्षा वाली बात ही नहीं है अपने लिए. नहीं जैसे अपन ये देख रहे हैं वही सबसे भी है. हाँ यार बताओ यार. Mountain Dew is the closest any soft drink has come to being fully weaponized.
But did you know in Austria and यार बाबू Norway भाई, the ये चीज तो soda अपने is आप ही मिलने लग गई outright यार इसमें की banned? चीज। That's because Mountain Dew's signature Chernobyl तो डब्बे में भी आ गई है radiant तो। Q comes पहला from कुप्पी में आती थी बॉटल में। tartrazine, also known as yellow 5. And if your ADHD hasn't kicked in yet, you'll remember that color and number from the Skittles section earlier. It's been linked to headaches, hyperactivity, and the desire to be annoying to other people. Ironically, the qualities that make Mountain Dew a soda non gratis in other countries is exactly what the brand promotes. अब ये देखो आप दूसरे देशों में तो प्रतिबंधित अपने यहाँ धड़ाके बिक रही है। हाँ यार, फ्रिजों में रखिए अपना तो। A frenetic, over-caffeinated lifestyle. Do the do. Baja Blast. Woo-hoo. And while you might be able to find Mountain Dew in Europe, it's going to hit a little different. That's because Europe spent exactly 2 years in the 90s riding the dew before discontinuing it. What is being sold as Mountain Dew in the EU as a recipe closer to the original carbonated beverage, as created by Tennessee beverage bottlers Barney and Ollie Hartman in the 1940s. The original Mountain Dew was meant as a whiskey mixer, with the name coming from the affectionate Scottish term for moonshine. मतलब ये बात है, ये जो चीजें हैं दारू में मिलाने के लिए बनाया गया। आज देखो लोग शौक से पी रहे हैं। हाँ यार, बड़ी ताजुब की बात है यार अपने लिए तो यार। और अपनी लाइफ में तो यार बाबू भाई रूह अफ़ज़ा है और फालूदा है, ये एक नंबर चीज अपने लिए। अपन दो चीज पीते हो। It'll tickle your innards, is what the old ads used to read. No lies detected here. Yahoo! Mountain Dew! खूब लाया यार ये भी। Little Debbie has been providing Americans with comfort snack food since the 1960s, with their variety of zebra cakes, star crunches, nutty bars, fudge rounds, and cosmic brownies. यार बाबू देखने में तो सब चीज ऐसी लग रही तो यकीन नहीं बनेगा वो तो मेरा पैसे चल रहे तो मैं तो जाऊँ हाथ में ये बात सही है यार। But their big claim to fame, as anyone who has ever had their lunch packed by a parent can attest, is the Little Debbie Swiss Rolls, a mixture of rich chocolate cake and butter-creamy filling. Over 900 million cartons of Little Debbie products are shipped each year, but none of those cartons go anywhere near Austria or Norway. Blame those rascally additives, yellow 5 and red 40. Swiss rolls contain 32 milligrams of dye per product, and in those quantities, they've been shown to have an adverse effect on children. And we're not just talking about causing hyperactivity, although one study found that cutting all artificial food coloring from diets may be 1/2 as effective as prescribing kids Ritalin. And while we can't prove there's a direct connection between artificial food coloring and cancer, they do cause damage to white blood cells, causing them to mutate after only 3 hours. यार बाबू भाई तो बहुत खतरनाक मामला दिख रहा है यार मेरे को यार। कहीं ना कहीं यार मैं समझता हूँ कि ये जो रंग ये डाई के साथ में जो अपने को दे रहा है ये इंसान को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। Exposure to these dyes could cause tumor cells to multiply way more rapidly. For that reason, researchers say a high chronic intake of food colorings throughout the entire life is not advisable. If only they weren't so delicious. Surprisingly, यार मतलब कहने का ये है कि अपने को जो रंग जो खाना है ना वो सिर्फ कुदरती खाना ये हम अपने हाथ के बनाए हुए ये नहीं खाना। सही बात। You can buy Little Debbie Swiss rolls in the EU, but they come with warning labels advising parents of the potential dangers to kids. You know, like cigarettes. सही बात है ना, मैं खिलाऊं। When you hear the words banned breakfast cereal, you're probably imagining one of the countless kid-focused brands of sugary morsels, like the oh-so-delicious Cookie Crisp. So you might be surprised to learn that it's actually Special K, the most boring cereal on all of the earth, that has been banned in Denmark and discouraged in the EU. How does the healthiest box of flakes on the shelf get banned? और यहाँ दूसरी जगह बैंड है यार ये। यार बाबू भाई अपन तो कभी लाए नहीं और अपनों को देखने में ही ये चीजें यार। While stuff like Reese's Puffs and Cinnamon Toast Crunch continue to enjoy free passage. Ironically, because of its supposed health benefits. In the UK, Special K has been put on blast by the Advertising Standards Authority for exaggerating how much folic acid they pack into portions. Though it's still legal to buy in Europe, Denmark has completely banned Special K since 2004 for all its fortified vitamins and minerals. Regulators argue that Kellogg's cereal's unnaturally high levels of everything from vitamin A to zinc actually qualify Special K as a genetically modified organism,
or GMO. ये सब कुछ ज्यादा है तो फिर हम प्रतिबंध लगाने का कारण क्या क्यों लगाते हैं प्रतिबंध नहीं? बाबू भाई वो इसलिए लगा दिया होगा नहीं कि वो लिमिट से ज्यादा हो गया होगा, तो इसके कारण प्रतिबंध लगाया होगा। हाँ जी, हो सकता भी है। More specifically, Special K is swole with the same artificial compounds that studies have shown to potentially pose health risks, specifically to children and pregnant women. In conclusion, you may want to stick with crunch berries. अच्छा, You don't need to take a transcontinental flight to visit countries that have banned American foods. Just drive up to the Canadian border, flash your passport, and sign an affidavit saying you're not smuggling any steak tartare in your trunk. Today, consuming raw meat has fallen out of fashion in the US, much like other foods like veal and pate, which don't make you sick but might make you sad. अच्छा। अब इसे क्या है सर, हमारा वहाँ तो गोश्त भी खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं और सब लिमिट से हमारा चलते रहता है। ऐसा नहीं कि गोश्त ही गोश्त खाया जा रहा। ये तो सेक्सुअलाइज भी है क्या? वो गोश्त और सब्जी उसका मेंटेन अपन बना रहते हैं। अपन ये एक चीज के पीछे नहीं भाग रहे क्या? गोश्त नहीं, गोश्त भी खा ले तो सब्जी भी खा ले, दाल भी खा ले। But while baby cow and overstuffed goose liver is illegal in parts of America now, tartare is not. See, while veal and pate may be uncool, they are also served hot. Unlike tartare, which is chopped up cold meat, straight from the cow. Undercooked or raw foods can lead to an increase in food poisoning and parasitic infections. इतना खतरनाक मामला। अरे यार भाई, इतने खतरे तो भी खा क्यों रहे हो यार? हाँ यार, तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आ रही है हमारे को यार। सब चीज आप दिखा रहे हो, उसके बाद वो चीज धड़ाके से चल रही है। ये कौन सी बात है? हाँ यार। Especially in beef and poultry. But considering how fancy pants steak tartare is, Titanic food one might say, you'd think countries might look the other way and let the luxury delicacy slide. And for a long time they did. In Canada, meat has to reach an internal temperature of 145 degrees Fahrenheit, the equivalent of a medium rare steak, in order to be considered safe to serve. But those rules aren't strictly enforced. That is, until recently. In 2021, restaurant owners in New Brunswick selling steak tartare were all served cease and desist letters. Canadian public health officials had decided that amid the ongoing health crisis of COVID-19, the last thing their citizens needed was a side order of botulism. दोस्तों मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैं केवल सिर्फ बकरे का गोश्त खाता हूँ। और बकरे का गोश्त जब मैं हम भी लेकर आता हूँ, खाली वो गोश्त नहीं पकाऊंगा, कभी उसमें अरबी डाल दूंगा, कभी आलू डाल दूंगा, कभी मटर डाल दूंगा, कभी और कुछ डाल दूंगा। सादा कोई कभी नहीं बना, उसमें कुछ ना कुछ सब्जी भी उसमें मिला होता है, सब्जी का और गोश्त का बैलेंस बराबर है। Coca-Cola? Is there anything more American than Coca-Cola? The fizz, the flavor, the former secret ingredient, cocaine. Coke is basically apple pie in beverage form. And it's not just Americans who are cuckoo for Coke. Invented by a pharmacist in 1886 Georgia, Coca-Cola quickly caught on overseas. It was the World War II GI's drink of choice. Pre-pandemic, Coca-Cola had 500 brands in over 200 countries, making it the best-selling soft drink and one of the most recognizable brands of all time. ये बात तो सही है यार। यार बाबू भाई, अपने एक तो सड़क से गांव में बिकता है ये कोका-कोला, तो दुनिया तो बहुत बड़ी है यार। हाँ यार, छोटा-मोटा ब्रांड है क्या? But there will always be exceptions. And unlike the other entries on the list, for once, it has nothing to do with health concerns. Everybody knows that Coke is not good for you. We just decided collectively that we don't care. No, the countries that have outlawed the brand have done so because of what it represents, a symbol of the encroachment of American capitalism. From 1962 to 2011, the U.S. banned sales of Coke to Burma as part of sanctions against the military junta that ruled the country until 2011. It resumed sales in the country in 2012. Today, Coca-Cola is only unavailable in 2 countries with long-term trade embargoes with the U.S. North Korea hasn't allowed Coke since 1950, and the bubbly beverage has been banned in Cuba since Fidel Castro ceased supplies in 1962. बताओ यार बाबू भाई, 2 देश छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में बिक रहा है कोका-कोला। बोलो आप। First the prequels, now Coke. Is there anything that can't be ruined by the federalization of trade taxation? In a twist of irony and lime, Cuba was actually one of the first bottlers of the beverage outside of America. Today,
Cuba-Cola has replaced Coke as the country's soft drink of choice, though बात. black market sales abound. After all, it is the birthplace of the Cuba Libre, aka the rum and Coke. अच्छा इसको देखा जाए तो दूसरे को कोई दूसरे नहीं अपनी नहीं बताओ यार, हाँ सब कमाई के जरिए हैं यार बाबू भाई। M&M's, the delicious melt-in-your-mouth, not-in-your-hand snacks, were originally a collaboration between the Scion sons of the Mars and Hershey dynasties in 1941. Like Coca-Cola, M&M's gained international fans during World War II, as American soldiers popularized the candy overseas as the chocolate that won't get your trigger finger all sticky. But you won't find the candy in Sweden, where it's banned due to a trademark conflict with a popular national candy that also features lowercase m's as its signature. When Mars introduced the candy to Sweden in 2009, a court ruled its marketing too similar to that of the Norwegian Marabous, which resemble Kit Kats. During World War I, Marabou had moved its manufacturing to its Swedish neighbors, where it received a royal warrant of appointment by the King of Sweden. And here we thought the Swiss were the chocolate snobs. Should you want to check out what the fuss is all about, Marabou's is sold in IKEA stores here in the US. Well, at least it's good to know that M&M's don't contain any harmful dyes or chlorine residue, right? That's a pretty important victory for hard-shelled chocolate. इसके अंदर जब चीज मतलब हालांकि दूसरे कोई चीज नहीं सारे झगड़े अगर कोई है तो वो कॉपीराइट के झगड़े हैं। अब तेरी कंपनी तुझे कोई फार्मूला अपना मेरी कंपनी मिलने वो यानी कि सब अपने मैदान में उतरे हुए हैं, बस नकली होने। So what do you think? Which of these banned foods sounds the most delicious? Let us know in the comments below, and while you're at it, check out some of these other videos from Weird History Food. सर मैं तो माफी चाहता हूँ कि इसमें हम तो कुछ भी नहीं खाते हैं। हम तो ये चॉकलेट वगैरह चीजें तो हम फालतू खाते ही नहीं है। इसकी जगह गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बहुत सारी चीजें हैं खाने जैसी है, वो हम खाते हैं। जैसे कि मटन है, हमारे हाथ से हम खुद ला के लेके आते हैं, साफ सफाई करवा के उसको खाते हैं। बस यही है हमारे जीवन में। और बेटा वो मुर्गा मांस भूल गया। अगर अपन जब हाट में जाते हैं क्या तो सबसे पहले अपन मुर्गा भी दे देते उसको चला फिरा के कहीं लूला तो नहीं तो ये अब जैसे मछली वो भी अपन जाएंगे सूंघेंगे देखा कि इसका खून क्या है देख पूरी जांच पड़ताल होगी उसके बाद ही अपन कटवाएंगे फिर अपन लेकर आएंगे। अब ये जो फल चीजें ये तो अपन खाते ही नहीं है। जैसे के साथ कि हम तो ज्यादातर ये पोल्ट्री फार्म के जो मुर्गा मुर्गी रहते हैं ये ज्यादातर तो हम तो बिल्कुल देसी पसंद करते हैं। इन मुर्गों को तो हम पसंद करते ही नहीं है। और जैसे कि हमने सुन रखा है कि इसको दवा गोली इंजेक्शन देके इसको बढ़ाते हैं, तो हम तो ज्यादातर देसी भी पसंद है हमारे को। नहीं भैया ये जो चॉकलेट है और ये जो दूसरी चीज है हालांकि ये हमारे बच्चे खा रहे हैं लेकिन ये वीडियो जो देखिए इसके बाद हमको ये बच्चे को रोकेंगे इसको रोक लगाएंगे नहीं तो ये जो चीज है अब बच्चों को पीछे भागेंगे। लेकिन हाँ ये वीडियो देख अब इस पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे बच्चों को खाने से। बाबू भाई जैसे कुल मिला के अपनों ने वीडियो देखी है अपने, अब इनसे आंखें खुल गई हैं और अपन अब बच्चों पे रोक भी करेंगे कि ये बच्चे ना खाएं। अब क्या है मैंने अभी तक तो अपन नींद में थे अनजान थे अपने को कोई जानकारी थी नहीं। अब हालांकि जिसमें जितनी चीजें दिखाई है इस वीडियो में दिखाई है क्या वो सब लेकिन इन चीजों का अपन इसको जान के अब अपन आगे से अपने बच्चों पे रोक लगाएंगे। जैसे क्या राहुल भाई इसमें वीडियो में बताया है कि रंग बिरंगी जो कलर रहते हैं अब वो कलर के जो चीजें हैं वो बच्चों को कैंसर करने वाला मामला हो रहा है। हाँ यार तो अब वो कुदरती कलर नहीं है, वो इंसान के हाथ की बनाई हुई चीजें हैं, उसी से बच्चे का कैंसर हो रही है और अपन समझ नहीं पा रहा है इन चीजों को। अच्छा वो जो दूसरे यूरोप में कितने बड़े लेवल में अब वो खुद ये इसको समझ के अपने बच्चे को बचा रहे हैं तो अपन भी तो अपने बच्चे को ये अपन को जाहिल थोड़ी अपने बच्चों को अपन खिलाएं चीजें। जैसे कि बाबू भाई जैसे ये चीजें खाने से कि कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां खड़ी हो रही हैं आ रही हैं अपने देश में बढ़ रही है। और तुम्हारे जमाने में मोतीचूर के लड्डू और कुछ भी खाते थे गुड़ वगैरह है जैसी ये चीजें खाते थे, आज भी देख लो तुम फिर
उस जमाने में बीमारी थी ही नहीं। अब ये नए नए चुटके निकल गए हैं हाँ, खाने पीने के, अब बीमारियां खड़ी हो रही हैं। बड़ी हो रही है। क्या भैया का अभी तो हम तक तो बचपन से लेकर कौन से बुरी चलता है और वही होता है। ये तो मैं यहाँ आया हूँ तो इसलिए हम चॉकलेट का जो पैसा है कुछ चीजें तो अपना जरूर खाने शुरू करी। तो अभी तक तो मैं गुड़ का ही सेवन करता हुआ है। सही बात। आज जोड़ के लिए निवेदन है कि जो कंपनी जो ऐसी चीजें बना रही है और जो इसमें कलर यूज कर रही है अपने फायदे के लिए ऐसी चीजें जो अब आपके जो है बच्चे उनको आप खिलाओगे नहीं। अब जो आप बना कर दूसरे को बच्चे को भेजो तो मेरा खाली हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि ये चीज़ों को आप बंद करें। अगर आपकी कंपनी चलाना है आप खिलाना है तो कोई अच्छा बनाओ, उसमें आपका भी भला और जो खाने वाले हैं उनका भी भला। जैसे यह बीमारियों से जो चीज़ें आप मिला कर आप बेच तो उसमें कंपनी का नुकसान है। बेचारे वो बच्चे जान से जाएंगे तो जाएंगे, उसमें आपके ऊपर बहुत बड़ा वो आ सकता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इससे खुद भी बचे दूसरों को भी बचाए और दूसरों को भी समझे अपना बच्चा जैसा। सर जैसे कि अगली बार फिर मिलेंगे, वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।